बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्वेंट्री वैल्यूएशन हम पढ़ रहे हैं और आज जो वीडियो हम कर रहे हैं उसमें एक प्रैक्टिकल सिनेरियो हम डिस्कस करेंगे और फिर उसमें जो है इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। So what I did it is I tried to create a practical example and in which we are purchasing inventory and we are also doing the inventory valuation in the end. Okay, तो इसको देख लेते हैं। इसमें मैंने जो है सारी परचेज की ट्रांजैक्शंस जो भी हैं, जो भी कॉस्ट एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो मैंने इसमें कोशिश की है कि इसमें मैं सारे इंक्लूड कर लूँ और फिर देखूँ कि अगर इस तरह के सिनेरियो में आपसे कहा जाए कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन करनी है तो फिर आपका प्रोसेस क्या होगा और आपकी अप्रोच क्या होगी इन्वेंट्री वैल्यूएशन की। लेट्स गो थ्रू दैट। On May 31st, 2022, the inventory records of ABC company shows 1200 units at a cost of rupees 600 each. The company is engaged in trading business and following weighted average cost formula for inventory valuation. अच्छा, ये ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है 31st मई को और उसका बताया हुआ है कि 1200 यूनिट्स हैं और कॉस्ट पर यूनिट है 600 ईच। ठीक है। ऑन जून 10, 2022, ABC कंपनी परचेज 1000 यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 500 पर यूनिट. Sales tax at the rate 17% is also applied on the invoice price. Okay, the Incoterms agreed with the supplier is X Works. ABC कंपनी इज अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर. ओके, तो ये एक ट्रांजैक्शन करी है, इन्होंने 1000 यूनिट्स परचेज किए हैं एंड एट अ प्राइस ऑफ 500 पर यूनिट प्लस 17% विद सेल्स टैक्स भी इन्होंने पे करना है. इनको टर्म्स एक्स वर्क्स एंड कंपनी इज अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर. इट मीन्स दैट दे विल अकाउंट फॉर द सेल्स टैक्स separately. As supplier is located in a different city, goods need to be transported through a carrier company which will require 4 days to bring the goods to ABC's warehouse. Okay. The transport company picked the goods from supplier's factory on June 10. Transportation company will charge rupees 25 per unit for transportation. Loading charges paid by the transporter while picking the goods were rupees 10 per unit, for which ABC company will reimburse the transport company. Okay, so this loading charges is to be borne by ABC company, which is currently paid by the transporter, but ultimately it will be borne by the ABC company. So it will include so transporter will charge this amount to ABC. Then we have further on June 15, ABC company incurred the unloading charges at their warehouse while receiving the goods for rupees 12 per unit. So they received the goods on June 15 and paid some unloading charges as well. Invoice from supplier shows credit terms of like 3% discount if paid within 10 days and total credit limit is 30 days. ABC company made the full payment to supplier on June 15, 2022 to avail the discount. So on the same day when they received the goods, they made the full payment to avail the discounts. On June 22, ABC made sales of 1500 units to a customer at a price of 900 per unit on 30 days credit. Okay, so on June 22 they made a sales and the requirement they are asking is prepare necessary journal entries and calculate the closing inventory at June 30, 2022. So this is the example and this is a scenario where we have purchased some inventory and we also have an opening inventory at the beginning of the month, and we also have to calculate the value of the closing inventory. Okay, so whenever you have this type of scenario, first you need to calculate the cost of purchase of inventory. And what you will do, you will include all the elements of the cost, not just the invoice price, but also the transportation, any loading charges, unloading charges, everything
you need to account for and compute the first the cost of this purchase, this particular transaction. You need to compute the cost of purchase for this particular transaction, and only then you will be able to calculate the value of the inventory through a cost formula. Okay, you will not just take the invoice price. Okay, so first like in this scenario, let's go through the transactions one by one. Okay, अब हमें ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, हमसे कहा जा रहा है कि नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बनाएं. देखें ओपनिंग इन्वेंट्री, इसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी. ओके, देन वी हैव अ परचेज ट्रांजैक्शन, और on June 10 we purchased 1000 units. Okay, and our price would include, our price will also have 17% sales tax, which will be on top of this price. I am assuming that this 500, which is a invoice price, does not include any sales tax. So first entry I will make for the purchase of inventory. Since the inventory is not yet received and it is picked by the transport company on June 10, so on June 10 I will make an entry. अब जून 10 को हमें इन्वेंट्री इन ट्रांजिट को डेबिट करना पड़ेगा, और ये हमने कैसे किया है. जो इनवॉइस प्राइस थी वो हमारी 500 रुपीज इंटू 1000 यूनिट्स, तो 500,000 हमारी इनवॉइस प्राइस आ गई. फिर जो उसमें सेल्स टैक्स लगा है हमें, क्योंकि हम भी रजिस्टर्ड, एबीसी इज ऑल्सो रजिस्टर्ड सेल्स टैक्स पेयर, तो वो सेल्स टैक्स को अकाउंट फॉर करेगी. तो सेल्स टैक्स को डेबिट कर दिया. मैंने आपको बताया था कि ये इनपुट सेल्स टैक्स होता है, और ये जो है रिकवर करना होता है हमें, तो ये रिसीवेबल नेचर का है, तो इसको डेबिट कर देंगे. और फिर टोटल अमाउंट जो हमने पे करना है सप्लायर को, अकाउंट्स पेबल को, उससे क्रेडिट कर देंगे. तो ये हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गई जो हमने बुक करी जून 10 को. अच्छा, जून 10 को हमने ट्रांसपोर्टर से भी अरेंजमेंट की हुई थी कि वो गुड्स पिक कर लेगा, और उसने गुड्स पिक करी. तो सेकंड ट्रांजैक्शन जो उसकी हुई वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस प्लस आपके लोडिंग चार्जेस, और ये किस तरह से 25 जो है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस प्लस 10 जो उसने लोडिंग चार्जेस पे किए पर यूनिट. तो 35 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 35,000. इसको हमने मजीद इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड कर दिया, और हमने अभी इन्वेंट्री क्योंकि रिसीव नहीं हुई है तो जून 10 को हमने इन्वेंट्री इन ट्रांजिट को डेबिट कर दिया. अकाउंट्स पेबल टुवर्ड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी हमने क्रेडिट कर दिया. ये लायबिलिटी हमने ट्रांसपोर्ट कंपनी को पे करनी है, तो इसलिए हमने ये क्रेडिट कर दिया. अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट कौन सी ट्रांजेक्शन है. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास ऑन जून 15 ABC company incurred unloading charges at their warehouse while receiving the goods, and unloading charges was rupees 12 per unit. So we will make the entries for June 15. अच्छा, जून 15 पे जब इन्वेंट्री रिसीव हुई तो we debited the inventory and credit inventory in transit because we already received the inventory. सो यहाँ पे अब देखिए इन्वेंट्री इन ट्रांजिट है 500,000 पहले हमने डेबिट किया था, फिर उसके बाद हमने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और लोडिंग चार्जेस ऐड किए थे 35,000 के. द होल अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री इन ट्रांजिट वाज 535,000. सो होल अमाउंट वाज क्रेडिटेड एंड द इन्वेंट्री अकाउंट इज डेबिटेड. ओके, सो अनदर इंफॉर्मेशन वाज के देयर वर सम अनलोडिंग चार्जेस पेड टू लेबर of rupees 12,000. How they calculated 12,000 is 12 into 1,000 units. Okay, so this will also be included in inventory cost. So we debited inventory by 12,000 and credited cash. I'm assuming this is paid on site to the labor, so I'm crediting the cash. तो ये ट्रांजेक्शन हो गई हमारी 15 जून की. इसके अलावा further information that we have is invoice from supplier shows credit terms of 3% discount if paid within 10 days, total credit limit 30 days. ABC company made full payment to supplier on June 15 to avail the discount. So on the same day they made the full payment, and so we will make the payment entry as well, and will also take the discounts. So the total accounts payable towards the supplier was 585. So total liability will be debited
by 585,000, which is like this 500,000 plus sales tax amount, and we credited in the beginning. So we will debit it. This 585 पूरा debit हो जाएगा. And how we will calculate the discount? It will be calculated only on the invoice price, which is 500,000 into 3%. 15,000. 15,000 is the discount, and the remaining amount, which is 570,000, will be paid through the bank. Okay, so we made this entry and we cleared this liability towards the supplier. Accounts payable debited, inventory credited, and bank credited. So this discount, we already know that discount will be deducted from the cost of the inventory, so that's why we credited the inventory. Okay, now these are the transactions that we recorded till 15th of June. And then there is further information, which is on June 22 ABC made sales of 1500 units to a customer at a price of 900 per unit on 30 days credit limit. Now हमें ये करना पड़ेगा before we go into recording the sales entry. We have to compute the cost of the inventory, because we purchase an inventory and of like 1000 units. So, and we are following weighted average cost formula, and we know that every purchase transaction, after every purchase transaction, the average cost of the inventory, average per unit cost of the inventory change whenever we purchase inventory. Okay, so यहाँ पे हमने we purchase 1000 units. तो अब क्या करना पड़ेगा? अब ये एंट्रीज तो हो गई हमारी, लेकिन सेल्स की एंट्री नहीं हो सकती, कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि हम वेटेड एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट ना कर लें. तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नाउ फर्स्ट, जो हमने ये ट्रांजैक्शन की है उससे हमें जो टोटल परचेज कॉस्ट है वो कंप्यूट करनी पड़ेगी. अब ये देखें, मैंने कंप्यूट करी है. देखिए, इनवॉइस प्राइस थी 500 आइटम्स इंटू 1000 आइटम्स इंटू 500 कॉस्ट, जो प्राइस थी हमारी सप्लायर से, प्लस जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वी पेड टू ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, प्लस लोडिंग चार्जेस पेड बाय द ट्रांसपोर्टर कंपनी, which will be ultimately borne by ABC company 10,000 at a rate of rupees 10 into 1000 units. And then we also paid unloading charges while receiving the inventory, which is like 12,000. And then while making the payment, we also got a discount of 15,000. So the total of this is the purchase price of this transaction, which is 532,000. So this 532,000 represents the purchase cost of 1000 units. Okay, now let's go to the computation of weighted average cost. ठीक है, नाउ ये हमारे पास ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से कैलकुलेशन होगी इसकी कि on 1st June we have an inventory of 1200 units at a cost of 600. So the total cost of the inventory held was 720,000, and then we purchased 1000 units. Okay, so how we calculated the cost, which is 530,000, we just saw it. Okay, so here we will calculate the average cost. See, this 720,000 plus 532,000 divided by 1200, which was opening inventory, plus 1000 units, which is the newly purchased inventory. Okay, so the average cost, weighted average cost we got is 569. So we compute the whole inventory, we value the whole inventory on this 569,000. So now we have 2200 units available in our inventory. 2200 units multiplied by 569 is equals to 1.2 million. 1.2 million 52,000. So this is the total cost of the inventory after this new purchase. Okay, now what we will do, we will do the transaction of sales and cost of sales. For transaction of sales, we know that selling price is given
in the information that we have. 1500 units sold at a price of 900 per unit, and we are assuming that this 900 does not include any sales tax. We have to apply the sales tax over it. So we'll make the entry for the sales on June 22. So on June 22, how I computed the sales is like sales value is 900 units into 1500 units. This is 1500 actually. 900 into 1500 is 1.35 million. Okay, so I credited my sales with this amount, 1.3 million sales हो गई, and then I calculated 17% sales tax on this 1.35 million, which is 17% of this 1.35 million. I credited the sales tax because it is our liability. We have to pay this sales tax to the tax authority. So we credited sales tax, and the total amount of this is we debited at the account receivable because we have to receive it from the customer. So the total is like 1.5 million 79,500. So this is the sales entry. Now come to the cost of sales. How the cost of sales will be computed? We know that inventory weighted average cost we computed just is 569 per unit. Now the inventory rate is 569 per unit. Our total inventory is valued at this rate, 569. So any issuance will be computed through this rate. So how I computed my cost of sales is 1500 multiplied by 569. It gives me a cost of sales of 853,636. Okay, so this is how I computed 569 multiplied by 1500. This is the cost of sales. I debited my cost of sales and credited the inventory. So now this entries for the sales and cost of sales are done. So now we can compute the closing inventory, which was the requirement. We have to compute the closing inventory as on June 30. So 2200 units were there, okay, and we sold 1500 units. So we left with 700 units, and 700 units will again be valued at the rate, average rate that we calculated at the time of purchase, which is 569. So 700 times 569, it gives a closing inventory value of 398,364. Okay, so this is the value of the closing inventory. So that's how I will calculate my closing inventory using weighted average cost formula. So now what we have learned here is that in these type of scenarios we are having different components of cost. The first step would be to compute the total cost of that purchase transaction, and how I calculated that, include every cost element, and then so this is how I will calculate the total purchase cost of that particular transaction. Only then I will be able to compute my weighted average cost of the inventory. Okay, so I tried to cover all the practical aspects. ठीक है, नॉर्मली जो एग्जाम्स में होते हैं इस तरह से डेटा नहीं होता हमारे पास, लेकिन मैं क्योंकि समझाने के लिए मैंने इतनी सारी चीजें उसमें इंक्लूड की हैं ताकि आपको एक प्रोसेस जो है वो क्लियर हो जाए कि जब कभी प्रैक्टिकल सिनेरियो हो और उसमें आपसे कहा जाए कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन करनी है, तो आपको पता हो कि आपका प्रोसेस क्या होगा, आपकी अप्रोच क्या होगी. तो ये हमने देख लिया आज. इसको मजीद कॉम्प्लेक्स किया जा सकता है कि अगर इसको लोकल परचेज के बजाय इसमें कहा जाए कि इसमें इंपोर्ट परचेज किए है और इन्वेंट्री को किसी दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करना है, तो उसमें फिर वो वाले एलिमेंट्स भी शामिल हो जाएंगे जो इंपोर्ट के अंदर एप्लीकेबल होते हैं. मसलन
इंपोर्ट ड्यूटी हो सकती है, उसमें सी फ्रेट हो सकता है, उसमें जो है कोई इंश्योरेंस इन ट्रांजिट भी हो सकता है, वो भी सब जो है ना इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल हो जाएगा, जैसे कि अभी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस शामिल हुए। ठीक है, तो ये आपके जहन में रहे कि जो भी इन्वेंट्री को परचेज करने में जब तक इन्वेंट्री आपके पास पहुंच नहीं जाती, जो जो हमने इन्वेंट्री की डेफिनेशन, कॉस्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि क्या क्या चीजें उसमें शामिल होंगी, कौन से एलिमेंट्स, तो वो आपको सब जहन में रखने। तो इस तरह से आप जो है पहले कॉस्ट कंप्यूट करेंगे, उसके बाद आप वेटेड एवरेज फॉर्मूले से इन्वेंट्री रेट जो है वो कंप्यूट करेंगे। अच्छा, इसको फीफो में भी हम कर सकते थे। फीफो अगर होता हमारे पास तो हम क्या करते, अगर हमारे पास क्वेश्चन में ये बोला होता हमें कि इससे आप फीफो कैलकुलेट करें, कंपनी फीफो फॉलो करती है, तो फीफो में ये होता कि उसमें भी आपको यही फॉलो करना होता। ये 532,000 आप कंप्यूट करते, इसको ये कॉस्ट हो जाती उन 1000 यूनिट्स की जो आपने इस ट्रांजैक्शन में परचेज की, और फिर ये होता कि एवरेज रेट कैलकुलेट ना करते, जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो इसी 600 पे रहती, और जो नई इन्वेंट्री आती उसके लिए आप जो एवरेज रेट यहां से निकलता वो होता आपका 532। ये आपका एवरेज रेट हो जाता 532, तो जो 1000 यूनिट्स परचेज किए होते वो 532 होता। और इस तरह से आपको पता है कि जब आप सेल करेंगे तो आप पहले 600 यूनिट जो आपकी 600 कॉस्ट पे इन्वेंट्री उसको आप आउट करेंगे, और उसके बाद आप जो रिमेनिंग यूनिट्स होंगे उसको लेटेस्ट परचेज में से आउट करेंगे। तो इस तरह से ये फीफो हो जाता। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अच्छा, आई होप कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन और कॉस्ट फार्मूला अब इसमें जो है कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, इसको हमने बहुत ही डिटेल में देख लिया है। अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चन हैं तो काइंडली इस वीडियो पे कमेंट करें, मैं उनको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू।